ऐतिहासिक, शैक्षणिक, साहित्य व संस्कृतीची जोड म्हणजे स्मार्ट पुणेकर न्यूज. Hello, so I am Siddharth Rajgaria. I am the chief learner at DPS हिंजवड़ी. ये जो कैंपस DPS हिंजवड़ी में DPS का हिंजवड़ी में चालू हो रहा है, this campus aims to develop a success mindset in our students. एक ये कैंपस का एक बहुत ही बड़ा वर्क है टूवर्ड्स डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस एंड द माइंड सेट ऑफ द स्टूडेंट्स. सो व्हाट वी आइडेंटिफाइड इज व्हाट गोज बियॉन्ड दीज 2 years. जो इन दोनों जो हमारे दिमाग में है वही चीज़ हमारी एक्चुअली बाहर की दुनिया को फॉर्म करता है. एंड दैट इज इनग्रेन्ड इनटू आवर करिकुलम दैट हाउ do we build the mindset of our children such that we create unlimited possibilities for our students at DPS Hinjewadi. There's a lot of thought process that has gone behind building this school at Hinjewadi. This is going to be one of the newest campuses of Delhi Public School. It is going to be enabled by a lot of technology. Technology will allow personalized learning journeys for the students, for the DIPSites at Hinjewadi, and that is really what separates this campus from any other campus. This campus will actually set the tone for how schools of the future should look like. While we deal with technology, while we use a lot of technology so that our children learn and we personalize those learning journeys, but with that we are also doing a lot of inner work for them. हम उनके thought processes को enable कर रहे हैं because we truly believe that the children of today will form the India of tomorrow, and we understand our role in that we play in building the India of tomorrow. तो ये जो कैंपस है ये एकदम बहुत ही पिक्चरस्क लोकेशन पे है. there's a beautiful hill behind, and we use the infra as a learning aid. So हमने बहुत ही सोच करके इस को पिकअप किया है. One exercise that we do in many of our campuses is हम बच्चों को बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट करते हैं, उनको इस टाइप के हिल्स पे क्लाइंब कराते हैं, and through that we connect their learning journeys. तो जब वो ऊपर जाते हैं तब वो जाकर के they get that feeling of euphoria, कुछ एक अच्छा करने का, and then they go and set their goals for the year. And so we build in a lot of learning with nature, and तो ये कब से स्टार्ट होगा स्कूल? So this campus will start from June in the coming year. Right now the building is under construction, and June से this will be full-fledged. It will start. Yes. जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पहले से कुछ खामियां हैं कि सिलेबस और जो भी पढ़ाने का तरीका है बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपके स्कूल से क्या होगा, मतलब कौन सा सिस्टम मतलब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा? CBSE होगा, क्या होगा, उसके बारे में बताइए. So we follow the CBSE curriculum, but beyond the CBSE curriculum we actually teach the children for understanding. Teaching और understanding में बहुत फर्क है. We do teaching, but we don't just do teaching to finish the syllabus. We do teaching for the purpose of understanding, ताकि बच्चा समझे. हम ये नहीं बोलते कि भाई हमने तो पढ़ा दिया, नहीं, but rather बच्चे को समझ में आना चाहिए. वो समझेगा तब जब वो अपनी लर्निंग को कहीं दूसरे सिचुएशन में यूज कर पाएगा. सो जो हमारी NCERT की किताबें भी हैं उसमें भी 3rd पेज में अगर कोई भी उठा करके देखेगा तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है that this book is not the only source of knowledge. Please use other sources. But unfortunately in our country many schools stick to just the textbook, and we want this school will definitely set that example that how do we go much beyond textbook, how do we bring in various ways of learning such that an understanding is built. ये फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? जो इकोनॉमिकली थोड़ा वीकर सेक्शन से है उन बच्चों को कुछ इस पे है कुछ एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहेगा, उसके बारे में भी बताइए. So currently we have an expression of interest campaign going on. The fee structure is not yet finalized. It will be in the range of 1,30,000 to 1,70,000 per annum.
per annum. It is not yet finalized. It will be revealed on the 24th of this month, and that is when you'll come to know about the exact fee structure here. ओके और जो वीकर सेक्शंस के लिए कुछ स्पेशली बच्चों के लिए कुछ है ऐसा So I think all of that. स्कॉलरशिप एंड So we definitely have a lot of financial aid programs going on. I think 24th of September will be the day when we will be able to reveal all of that. थैंक